surely want to visit Chiang Mai, which is in Thailand. Bangkok बहुत popular हो चुका है, but I think Chiang Mai is very underrated and it's all historic या places. वही So I हिस्टोरिक. really want to go there. Hi guys, welcome back. Welcome back to the next episode of Random Conversations. This is the second season's second episode, and finally, after a lot of good requests and my personal suggestion, finally we have Neha on the podcast. So hi Neha, how are you? I am good. Are Hi you good? Vinny, Thank you. Thanks for asking. how are you? I'm good. I'm good. First of all, guys, small disclaimer: we are in Shillong, one of the really good places, and वहाँ से हम shoot कर रहे हैं. So let's get to the first question. Tell us about the viewers about you. Like all the तुम्हारी बहुत तारीफ हो चुकी है podcast में, but tell us about yourself and what do you do? So professionally what do I do is I'm into fashion design and buying. अभी मैं 3 साल से I've been freelancing and I am slowly building it up into an agency. I'm also about to launch my own personal label which I've been working on, which Shouting. we have been working on since like almost 2 years now. Almost. It's okay. So the label name is Dokri. Please wait for our first collection to drop. And yeah, I'm living in Jaipur. I'm trying to live a slow life in Jaipur, but I thought it will be slow, but it's not slow. It's not going slow. Yeah, this is the first break I've taken in like 3 years. My. And the first vacation that we are doing is Shillong. Sida. Yes, Sida Northeast पहुंच गए. full power. Full power. और Okay. क्या? The second question that I really wanted to ask is who has been your biggest cheerleader and how have they helped? So मुझे ऐसा लगता है कि different phases of life में different different cheerleaders रहे हैं. I cannot name one क्योंकि phase wise ऐसे. So but overall if I have to name one is my mother and my father. हाँ पापा ने थोड़ा मुंह पे तारीफ करके या ऐसे करके कभी मोटिवेट नहीं करा ज़्यादा, बट माई मॉम हैज़ ऑलवेज मिले कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, इट्स ओके. एंड या दे आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल, तो यू नो दैट. बट डिफरेंट फेजेस में इफ आई से कुछ लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, विच इज़ वन ऑफ माई फैकल्टीज अर्जुन सर. He was in college. So I think he taught us about international level of designing, the processes, the mood boarding, the flat sketching and everything that I'm doing right now started from there. I'm able to work with international brands because of him. अगर वो नहीं आते, वो सब हमें international level का design process नहीं सिखाते, तो we wouldn't have been here. And he was such a, and not just teaching, he was a cheerleader in sense कि कुछ भी if I wanted to do something or try something in college, so he was always there to push me कि you have to do it and guidance करना. Yeah, it was very good. Then Mahadev, of course, he is like ऐसे हाथ पकड़ के मुझे लेके जाते हैं हर जगह. He makes things so easy for me every time. I feel very blessed. So yeah, these people. And also I would like to mention my sister क्योंकि उसने बहुत झेला है मुझे. She guys Because gonna be happy seeing yeah, this. because every sister, like क्योंकि every creative person is a weird and difficult kid, I think so. तो ना इजीली सबको समझ नहीं आ रहा होता कि इसके साथ सीन क्या है, मतलब. तो शी हैज ऑलवेज बीन माई चीयर लीडर. उसने कभी गिव अप नहीं किया. लाइक एट माई लोएस्ट ऑल्सो शी वॉज ऑलवेज देयर विद मी. सो हर चीज में लाइक कभी कभी ऐसा लगता था कि वो बड़ी बहन है और मैं छोटी हूँ, ऐसे उसने मेरी ये हेल्प किया. सबके साथ होता है यार. हाँ, सबके साथ. सो या Don't you want to give a shout out to Adu? Adu मार देगी तुम्हें. आदू सिस्टर, इसलिए तो बोला ना सिस्टर्स. आदू तो वाज ग्रोइंग अप, शी वाज लाइक हो चल क्या रहा है, मैं तो देख रही हूँ, आई एम द ऑडियंस. क्योंकि शी वाज सो यंग, बट बड़े होके ऑफ कोर्स लाइक या Okay, शी इज great. वे टू मैच्योर. Great, great. Okay. Have you ever designed something you thought was amazing, but the universe disagreed, and what happened? Yes, I think so. क्योंकि I think I was a very, as I said, weird kid. I used to experiment different things. So I remember this competition kind of a thing that I participated into. It was Eco Chic Design Awards, which happens in Singapore.
तो हम फाइनल में नहीं जा पाए थे, बट उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था, एंड व्हाट आई डिड वाज वेरी वियर्ड एंड क्रेजी. तो माय टॉपिक वाज स्टेन्स, ठीक है. सो आई Okay. पिक्ड 3 stains because I was working on the it's eco chic design award. तो पूरा sustainability पे you had to come up with different ideas. तो हमारे कपड़ों पे कितना stain हो जाता है, and then we just throw them away. Right. So I picked up 3 main stains, which was rust, क्योंकि कपड़ों में कुछ भी metal का ऐसे rust का पड़ा रह जाता है तो कितना वो rusty हो जाता है, and people just throw it away. Mm-hmm. Then there was stain of wine and also burn stains. ज़्यादातर iron burn ऐसे press करते करते लोग भूल जाते हैं. Then yeah, so for iron burn stain or wine stain was not that difficult to achieve, but achieving a rust stain to present the collection was very weird. So I remember मैं किसी ऐसी भंगार की दुकान पे गई थी जहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे रस्ट वाली चीजें ढूंढी थी छोटी छोटी, एंड यूजिंग द टाई डाई टेक्निक विच वी हैव फ्रॉम Nice. एजेस. So I tied up the white cotton cloth with threads with all the rust metal pieces, nails and everything, and I dipped it into a white vinegar and Okay. then kept and उसको एक पॉली में ऐसे टाइट बांध दिया था एयर टाइट करके, एंड वी केप्ट इट इन द सन फॉर 2 days. उसके बाद जब निकाला उसको, व्हेन वी ओपनड, तो जहाँ पे भी वो बंधा हुआ था एज टाई डाई वर्क्स, वो पूरा रस्ट का स्टेन आ चुका था. So that was I was really proud of, and I was very like proud of myself कि I could achieve this and experiment this and do this. But a lot of people were like कि क्या है ये कबाड़ के साथ काम कर रही है, what is wrong with her and all of that. But eventually my presentation skills were not that great at that point of time, so I couldn't get through the finals. But my concept was very similar to the person who won that season. So Oh, it gave me a relief कि ठीक है यार, जिसको सोचना है मेरे आसपास सोचने दो, but I think I'm doing something right. So yeah, बहुत crazy था वो. great. Okay. Do you have a ritual or a quirky habit that you do before getting into the creative zone? I think so. I just need Chai. You need a chai, chai. of course. माहौल, Yeah, you need a mahal. फुल माहौल. मैं घर में भी ऐसे पूरे लैम्प्स जला के, कैंडल्स जला के, एंड यू नो काम होना चाहिए. देयर शुड बी नो नॉइज अराउंड मी, एंड माय फोन नीड्स टू स्टॉप रिंगिंग. तो मैं फोन को कहीं रख देती हूँ दूसरे रूम में. देन yeah, that is the only ritual. Music is very very important. I cannot work without music. Mm-hmm. So yeah, sometimes it takes days माहौल बनाने के लिए, फिर वो एक ही 2 दिन में पूरा कलेक्शन बन जाता है, अदरवाइज एक एक हफ्ते तक क्रिएटिव ब्लॉक रहता है कभी कभी. सो दिस इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस ब्रेक, विनी. थोड़ा Yeah. दिमाग खुल जाए हमारा. You know, I don't have a ritual or a habit. It's just if I talk about writing, the word gets stuck in my brain and I have to like put it down in the paper. It does not matter रात के 4 बज रहे या सुबह के 10 बज रहे. It does not matter. I need to scribble it. That's for the writing. And when it comes to ideas, say suppose work wise, I just have to go and execute it. Like does not matter कि मैं वीडियो उसकी एडिटिंग 10 घंटे हो गए. And I remember some days पहले I was sitting 5 घंटे हो चुके थे एक डिजाइन पे, वो बना ही नहीं. And then the next day एक डिजाइन पे वो आधे घंटे में बन गया. So it's all about the mood, I guess. ऐसा But होता है. ritual मेरे पास नहीं है. You know, I am fine. I can work in a pop music or sad music. वही ना, fine it's for all me. on the mood, which mood you're in. Right. I also like to spend a lot of time in research. अगर if I have to design a collection, तो मैं ऐसे कहीं पे भी पड़े पड़े ना ऐसे लेजी मोड में आईपैड पे स्क्रॉल करती रहूंगी, थोड़ा रिसर्च करती रहूंगी, एंड देन डेज गो बाय जस्ट रिसर्चिंग एंड स्क्रॉलिंग, एंड देन एकदम से आई विल गेट इनटू वन जोन एंड सिट डाउन एंड जस्ट स्टार्ट स्केचिंग, एंड एक बार में ही सब That is the best. खत्म. That's the very best. Okay, so if you weren't a designer, okay, what career path would you choose? I think so. मेरे को बहुत interest आता है in these armed forces and like some spy or something, you know. I also keep watching these things. तो मुझे ऐसा लगता है I could have been a very crazy level of a spy, and like CIA which has agent. which has crazy skills, like कहीं से भी कुछ भी, like physically crazy skills, shooting and all, killing people. Killing people. Okay. So yeah, I think so. I would have been a great spy.
जैसे नहीं कुछ और ही लाइफ बन के जी रहे होते हैं, you have some different identity, you're placed somewhere and like you have to live that You're life an and like pull agent. out information. Great. ऐसा I mean, कुछ. you're good at collecting the information. So Yeah. yeah, you could be. Yeah. I think I would have started my career somewhere in the sports field. Like, you know, right? I was a basketball player. I would have maybe continued that. I was a martial arts student. So, अगर वो मैंने नहीं छोड़ा था, I would have become a national for sure. वो मुझे बड़े होके इंटरेस्ट आया है सोचो, तो मुझे ऐसा फील होता है I could have been such a great spy or You know, something. jumping from this country to that country. But I was very interested when I was a kid. I was very interested in astronomy as well. तो probably अगर मेरे को इतना पढ़ने में शौक होता तो शायद मैं एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कुछ बनती, साइंटिस्ट और समथिंग. बट मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी यार ऐसे. Were you a backbencher? No, I was a front bencher. I was sincere kid as well, but I was like not very inclined towards studies. It was always a pressure of bringing these and these numbers. मुझसे तो नहीं होता था. वही ना disadvantage of being the eldest child. We younger, like, इतना pressure नहीं होता है हमें. Okay. Have you ever had a design that completely flopped but you handled it? Yeah, many times. मतलब every time you're building a collection, something or the other happens. होता रहता है because it's the part and parcel of the field. You just go with the flow and fix things. इसीलिए development process उसको बोलते हैं कि you know, as basic as weather affects your designs and colors and everything if you're printing some print or something. So you have to like be prepared to make quick decisions so that you are not losing on time as well. तो या एक बार हुआ था ऐसे कि पूरे वेदर की वजह से, रेन्स की वजह से द होल प्रिंट ऑफ द होल कलेक्शन गॉट रियली बैड. ऐसे वो ब्लॉब्स बन गए थे. देयर वाज टू मच मॉइस्चर. So yeah, we had to stop printing for some time and wait for the sun to be back. And then yeah, we realized it on time, so we didn't end up printing पूरा इतना सारा fabric. But yeah, बहुत basic example है, but ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं. Right. होती रहती है. Okay. Is your workspace super organized or is it organized chaos? What's the weirdest thing I would go and find there? It's an organized chaos, of course, you have seen it. मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रख दूँ ना अपनी चीज़ें, तो मुझे ही नहीं मिलती है वो, and then I forget कि मेरे पास ऐसा कुछ था भी. You know, I'm a stationery hoarder, you know that. So you will find, अच्छा, what weird thing you will find is a lot of people have only a table chair वाला sitting area, Right. but मेरे को ज़मीन पे बैठ के like काम करना बहुत अच्छा लगता है, especially when I'm sketching and all. So I have a lower seating area as well. एक carpet लगा के बढ़िया तकिए वक्के लगा के, small table, and I like warm lighting in my creative space. Weird thing क्या मिलेगी तुझे? Toys, candles, weird? नहीं. Candles तो weird. तुम्हारे mood के लिए setup के लिए, right? So हाँ. I don't think that would be weird. स्टेशनरी कलेक्शन मेरा देख के लोग हाँ. वो हो जाते हैं कि इतना सारा, और ये क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा होता है उनको. कोई चीज़ like I remember मैंने जब लास्ट टाइम विजिट करा था, कोई चीज़ें it's like it's not even opened yet, you know, unwrap करके रखा हुआ है, just रखा हुआ है. And I used to be like, ये यूज कर रही है कि नहीं? Okay. Nee, I haven't organized. I don't have a organized kiosk. Weirdest thing you'll find is okay, so मेरे laptop के side में there's a huge pen holder and there'll be like different pens, different styles, which is never used, but it's still there. So I like to take a collections of, you know, pens and all. So that I think you'll find weird. बाकी सब organized है. I'm an इसमें organized ये कोई kid. weird नहीं है. मेरी तो कितनी This सारी is the स्टेशनरी least. है. I'm a like, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कितनी, आई एम अ होर्डर. मैं जाती हूँ ऐसे बल्क में मैं शॉपिंग कर लेती हूँ स्टेशनरी की. एंड मतलब लेटली यू हैव सीन कि मैं जापान से कितना कितना स्टेशनरी मंगा लेती हूँ, भले ही मैं उसको यूज कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बट You आई just शुड found हैव it इट. cute, ले लो. Okay. What's one memory from your childhood that shaped the person you are today? I know what काफी technical question type है, but what's one thing? आई डोंट नो मैन. एक मेमोरी तो बहुत मुश्किल है सोच पाना. What's the memory that you're fond of?
आई एम फॉन्ड ऑफ, मैंने बताया था तेरे को पहले एक बार कि यू नो लाइक आई यूज टू गो अपने आसपास टेलर आंटीज के पास जो सूट ब्लाउज सिलते हैं मम्मी या आंटियों के, तो उनसे ना मैं ऐसे कतरन मांग के लाती थी, स्क्रैप्स जो बचते थे, एंड आई यूज टू स्टिच गारमेंट्स फॉर माई बार्बी डॉल्स. ठीक है, दैट मेमोरी इज सो मच ऐसे हियर इन माई हेड, क्योंकि उसने नहीं सोचा था, दैट किड डिडंट इवन नो फैशन डिजाइन जैसा कोई कोर्स एग्जिस्ट करता है. और लाइक दैट मेमोरी इज लाइक किसी ने सोचा ही नहीं होगा ना कि बड़े होके, इवन माई फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक पीपल अराउंड मी, दे डिडंट थिंक आई विल बी इनटू फैशन बिकॉज यू नो हाउ आई हैव बीन लाइक अ जंकी. मतलब ऐसे कुछ भी पहन लिया कभी भी. Like people look at me and sometimes say that, are you a designer? Like, why do you dress up so weird? So Okay. that memory is very core. That kid never thought कि बड़े होके this will be a profession, you know. And that too, sustainable design is my forte. So I was already like building garments out of scrap. Yeah. So that's very crazy. Nice. Okay. Was there any specific moment you realized that this is the thing I want to do for the rest of my life? See, I always knew I wanted to do something creative. पर मैं जब छोटी थी ना, मैं कलरिंग पेंटिंग जब करती रहती थी, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार ये करने के मुझे पैसे कौन देगा. क्योंकि Okay. तब तक पता नहीं था ना कि इसमें भी पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि नहीं पता होता है लोगों को. तो या what was the question? When was the moment you realized that this is the thing I want to do for my life? हाँ, तो I was confused between architecture, interior designing and fashion designing. जब choose करने की बारी आई तब. But then I chose fashion because वही ना, from that memory I've Yeah. always been into this. My nanny has been a very big influence. Then I used to go there, visit her every summer vacation. तो वहाँ पे हैंडमेड क्रोशे के इतने सुंदर सुंदर चीजें बनी हुई है. Like she is crazy. Hand painted bed sheets, table Wow. covers and what not. So I used to embroideries. I used to go crazy looking at that. So तब I think I developed interest and मतलब I knew कि ये building वाला काम तो नहीं हो पाएगा मुझसे. I think I am more बहुत meant technical for है this. इसमें. हाँ, नहीं मुझे लगता था कि मैथ्स नहीं चाहिए होगी फैशन हाँ. डिजाइनिंग में, but बहुत है please, ना. I deal with measurements every day. Okay, great. For me, I think मैंने एक पॉडकास्ट में बोल दिया है पहले already. I was 16 and Lonavala की बात है. I was 16 and I was just strolling around a road or a garden. And whenever you come, I'll show you that place. You'll love the place. It's called Rhythm Hotel. Okay. Pura nature hai, everything, but at the same time, it has huge Arctic views. So I looked at it. It was just building up only. Okay. I looked at it. I don't know what got into me. I was like, I'm gonna own this for sure. And I'm like, and then question instantly, how are we going to own it? Like a business? Will be a business person. So वो दिमाग 16 से मेरा stuck हो चुका है. तो even when dad wanted me to do CA or choose something professional career apart from the business also, he used to keep on nagging कि ये कर ले वो कर ले, and I was like 16 मतलब 16, my head was right. I was like, I really don't care what the field is. I just have to start my business, and that's how it started. Okay. Um, what's something about your journey that people surprise every single time? That how are you a designer? Yeah, like like my friends, family, close ones, they knew that have this creative kida, but fashion was a surprise to a lot of people. अभी मेरी एक friend आई थी, school friend, we met after 15 years I think so she came at my place. उसने देखा sketches, कहती है ये तूने बनाए हैं? ऐसे देख रही हो मुझे. मैंने कहा हाँ भाई मैंने ही बनाए हैं, किसी और के लाके थोड़ी रखूंगी यहाँ पे. गारमेंट्स देख रही हो, मेरे सैम्पल्स देख रही है, and she was shocked. So yeah, fashion was a, I think so, and also business. क्योंकि nobody expected me to enter business because I was always a creative kid. But being creative, you also want to work on your own terms. Right. Like every creative does, you know that. So that was, I think, one of the biggest reasons to start business. My family, people, everybody around me was shocked कि इसको हुआ क्या है. Business तो छोड़ो, freelancing क्या होती है. Like my family was like,
एक स्टेबल जॉब तो होनी चाहिए ना. सो आई हैड लाइक आई जगल्ड इट फॉर अ वाइल. उनको बहुत टाइम लगा समझने में कि फ्रीलांसिंग भी एक चीज़ होती है. फ्रीलांसिंग करते हैं लोग एंड यू एक्चुअली कैन अर्न गुड मनी आउट ऑफ फ्रीलांसिंग एंड देन इवेंचुअली टर्न इट टू अ बिजनेस. बट उनको यही लगता रहता था कि अभी ये 2-4 महीने, फिर उसके बाद अगले आगे क्या करना है. So yeah, but it took time, you know, that it took time to get at that stage that you can leave your stable job and Hmm. do this. Right. Okay, let's talk about freelancing. How did you start it, and any tips that you want to give to anybody who wants to start freelancing? See, freelancing is something like, of course, you know कि टिप्स तो सबसे पहले तो ये होगी कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ही ढूंढो अपने लिए. ठीक है. दूसरा, अपस्किल योरसेल्फ. लाइक आप फुल टाइम जॉब में अगर आप एक आपका कैटेगरी में एक जॉब कि आप एक मैनेजर हो एक सर्टेन उसमें, तो मेरा what I'm doing is, and what I also feel is, as one person, if you can provide multiple services, okay, but expertise जैसे मेरा एक ही उसमें है, like resort wear या cotton prints and Jaipur and all of that, embroideries, woven business में, so my expertise in that. Hmm. But I can deliver from product, like from scratch to inspections and shipment, सब कुछ, from product, from designing to product development to, you know, getting it produced, कहाँ बनेगा, क्या cost में बनेगा, all of that. So एक तो the other person, the client, your client will not have to hire 4 people, Right. you know, they will end up saving on a lot of cost. Hmm. ठीक है. But मतलब पहले तो यू हैव टू ग्राइंड योरसेल्फ. ये नहीं कि पहला प्रोजेक्ट है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मनी, यू नो. यू Yeah, हैव टू that's बिल्ड पोर्टफोलियो. मैंने फ्री में इतना काम किया है, आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन. आई हैव लाइक वर्कड फॉर फ्री सो मच. या फिर मेरे को इतना भी मिल रहा है ना कि मेरा आने जाने का खर्चा कोई दे रहा है. I would just wanted to be in those spaces around those people who are such people, just to know कि what do they talk about, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, how does it work, बात कैसे करनी है एज अ फ्रीलांसर. क्योंकि वही है ना कि पहले आपके मन में तो यही डाउट रहता है ना कि आपको कोई क्यों पैसे देगा, right. है ना. सो अपस्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पीपल आर जस्ट सिटिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि उन्हें फ्रीलांस मिल जाएगा, नो, यू हैव टू डेवलप ऑन स्किल्स. डजेंट मैटर आपने क्या पढ़ा है, आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स अ लॉट. हाँ, इट कैन बिल्ड अ बिट ऑफ अ फाउंडेशन, बट यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. ये नहीं कि कॉलेज खत्म हो गया, नाउ यू आर डन. You need to keep learning things, update yourself. That is very, very important. Start slow, build a profile, build trust in people, be it clients, be it anybody. ठीक है. Money should not be the first priority. It takes time, it will come for sure, and people will pay you good money for your expertise. बट उस एक्सपर्टीज को दिखाने के लिए आपको उतना काम करना पड़ेगा ताकि आप उसके एक्सपर्ट बनो, है ना. Correct. तो यू हैव टू हैव अ नाइस पोर्टफोलियो और लाइक बैकग्राउंड कि मैंने इतने साल ये इतना इतना किया है, टू शो पीपल दैट यू आर एक्चुअली एन एक्सपर्ट. यू कांट बी लाइक फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ दिस सो एंड सो, you know, and expect lots and lots of money. Yeah, I mean, freelancing does take time, but at the same time, it teaches you how to be patient and consistency. Of course. Like, you know, ऐसा नहीं कि you complete your college and then you just start on the freelancing and then, you know, you'll start No, earning I always bucks. suggest कि one has to go to like to a corporate job and work, see that culture. Very important to be a freelancer क्योंकि that will make you more realize and confirm कि भाई ये तो नहीं करना है मुझे. I'm not This meant is for not this. my thing. Like क्योंकि यार how can you expect people to be कि यार 10 से शाम को 6 बजे तक you have to be creative and design and like do your shit, and क्या पता मेरे को रात में 2 बजे designs या idea आ रहे हैं. What if like उस टाइम पे तो You यही can't होता just है like ना. run off to the company and be like, no, I want to start right now. हाँ, एंड वही ना कॉर्पोरेट में वही हर 10 मिनट का हिसाब, तुमने चाय ब्रेक इतना ले लिया, तुमने ये इतना. डूड, काम तो हो रहा है ना तुम्हारा. सो इट्स लाइक स्लेवरी. सो आई कैन नॉट बी अ स्लेव. ये मुझे बहुत पहले समझ आ गया था, बट क्योंकि मैं ये फ्रीलांसिंग इसलिए कर पा रही क्योंकि मैंने वो जॉब्स करी. आई हैव सच अ ग्रेट नेटवर्क. आई लर्नड. क्योंकि मेरे को लगता है फ्रीलांसिंग से भी ज्यादा पेशेंस आपको कॉर्पोरेट में सिखा दी जाती है. But freelance prepares you to be a business person. Okay, if you want to have a business,
you first be a freelancer, because freelancing is also a business. Yeah, But it can be, वो छोटे स्केल पे होता है, you only are the business, ठीक है. तो you learn a lot of things and about business life and how can you be a, like even जैसे अब मैं डोकरी शुरू कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिल गई ऑलरेडी, बिकॉज आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग. लाइक मनी मैनेजमेंट ऑफ कोर्स आ जाता है, बट अभी तक मेरे को तो नहीं आया है. आई एम ट्राइंग टू लर्न. बट हाँ, कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है ना कि इस तारीख को सैलरी आ जाएगी. correct, So you have correct. to be very mindful of everything. So freelancing is very good for people who really want to start a business, because it's the first step. Correct. So, what age was it when you started the corporate? Like, I think I मतलब freelance तो मैं corporate से भी पहले कर रही थी. you started from the college, yeah. Freelancing I started from college only, but corporate I was in 2017 के mid में I started. So I think I was, how old was I? अभी मैं 31 की हो गई हूँ 2 दिन पहले. uh, I 16, no, no, not 16. I think I was 22, 23, something Okay, like that. yeah. Yeah, I 22, was I was 23. 17, 18 years, 2017 में. I completed my high school at that time. Yeah. तो वो Okay. first corporate job थी. Yeah, it was good. It was a good experience. And what was the first freelancing job जो तुमने करी थी college में? Like the very start. So there was this कुर्तियों का लाजपत नगर में ना वो था, वो जो लाजपत होलसेल में नगर. नहीं बेचते हैं कुर्तियाँ. So they approached me. I was also looking. मैं कुछ ना कुछ random चीजें पोस्ट करती रहती थी Facebook पे भी. So I somehow got to know, and they were ready to pay me 100 rupees per design, per Wow. kurti. I was like, wow, पैसे मिल रहे हैं, पहली बार फ्री में नहीं करना पड़ रहा है, 100 रुपए भी मिल रहे हैं भाई. तो मैंने कहा सही है, 10 डिजाइन में 1000 रुपए बन जाएंगे. तो दैट वाज माय फर्स्ट, या एक लाजपत नगर में कुर्तियों का होता. 100 rupees. तब तो मैं इतनी आई वाज, मैंने बोला ना, आई ट्राइड एवरीथिंग, व्हाटएवर केम माय वे, आई गेव माय बेस्ट. आई नेवर सेड नो टू इट, बिकॉज एक्सपीरियंस करने को जब तक, वही है ना, 10 चीजें जब तक, जस्ट 10 डिशेस ट्राई नहीं करोगे, कैसे बताओगे कि मेरी फेवरेट कौन सी है. सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि भाई डोंट गेट स्टक इन वन थिंग, ठीक है, ट्राई डिफरेंट थिंग्स Yeah. टू लर्न कि भाई ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है करने का, प्रोबेबली आई कैन बी एन एक्सपर्ट ऑफ दिस. So I enjoy, see, right now जैसे whatever my business is, मैं resort wear और ये सब जो summer clothing ये सब जो कर रही हूँ, okay, but my also my taste is also very punk and dark, and you know that is also my like streetwear, ठीक है, something that I'm very interested into, and I would want to try something of my own in that. But like one person can have different sides, Yeah, of ठीक है. course. I was 18. I remember first the thing that I started was an unpaid thing. Unacademy was the one where we were selling the courses. I did 3 months, and uske baad the first salary that I got was around 3K for sure. 3K थी हमारी मेरी salary, and then it started building, building, building. So at times, when people just are in the first year and be like, okay, let's roam around. I was the one who used to rush back to my home back and then, work like that. So मेरा mindset उस time से वैसी ही था, and my friends used to always be like, chill कर ले. Well, guys, no. वैसा था. Okay. Okay. Getting out of this, do you have a quirky life hack or habit that works odd for the others, but it really works for you? I think sleep. Sleep is very underestimated. Trust me. If you're slept well, you can work like crazy. मतलब Yeah. productivity is ये ना बहुत like जब this. बाद में रियलाइज होता है लोगों हाँ, को. but मतलब अगर जिनको हो चुका है उन्हें बोलना चाहिए कि भाई let people sleep, and people should prioritize sleep. जो खुद की sleep को भी prioritize नहीं करते हैं, I don't like them, because they are not able to realize. मतलब I don't like them से मेरा मतलब है कि जिनको मैं बोल रही होती हूँ कि भाई सोना ज़रूरी है, because if you are well slept, ठीक है, you can, I think मैं अपना बताऊँ तो मैं 8 घंटे का काम भी 3 घंटे में निपटा सकती हूँ, समझ रही है. बट इफ आई एम नॉट वेल स्लेप्ट, आई विल बी लाइक हाँ अभी करना है, 4 चाय पी ली, कॉफी पी ली, you're still not, your brain is like
अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता ना कुछ भी, I just go to sleep, and when I wake up I'm good. So I think the best life hack is sleep, क्योंकि we are not able to give rest to our eyes these days, ears, everything. Our brain is so much fogged because इतनी distractions है. Hmm. Sleep is something. That will heal it. But पता है कैसा होता है now, teens or 20s is something that everybody wants to, you know, look busy. तो फिर उसका they'll sit for, I don't know क्यों, but they'll sit for 10 hours, you work like a rat. I'll have stacks of coffees or tea. Trust me, I've been that person. I've never been that Because person. I have juggled full time and freelancing at once हाँ, as वैसे well. I have also done it, but then you know after some time जब health starts affecting, no, Yeah. then you realize पर कि इतना no, you वेट need क्यों करना sleep. है? जैसे मेरा कितना हेल्थ का इशू हो गया, उसके बाद नाउ even if I'm traveling, okay, पहले जैसे if I have a work visit, early morning flights लेके you're directly reaching to the factory or the venue wherever you have to be. No, I don't do that anymore. I go a day before. You ठीक sleep है, well. आराम से आई स्लीप वेल सो दैट आई कैन बी प्रोडक्टिव द वेरी नेक्स्ट डे, जिसके लिए मैं गई हूँ वहाँ. वरना मैं ऐसे आधे नींद में आधा काम करूंगी तो फिर What's the use? yeah. Yeah. So I prioritize my food and sleep way more now, which I never used to, and I saw repercussions of that. तो हमेशा ये याद रखना चाहिए लोगों को कि ये लंबी रेस का घोड़ा बनना है भाई. 2-4 साल कितना अपने आप को कर लोगे, उसके बाद if you're not okay physically, how will you like do things? Right. बेसिक स्टफ भी नहीं कर पाते हैं लोग. हाँ, मेरे को तो realization बहुत late हुई है. Now which have started यू आर being वेरी in यंग, practice. प्लीज. रियलाइजेशन लेट हुए हैं. Okay. Okay, talking about creativity and productivity, what's one thing you absolutely need to stay creative? Do you need music, coffee, or total silence? You've already said it, but do you need all three? आई थिंक म्यूजिक तो चाहिए ही चाहिए. Okay. अगर तुम्हें चाय नहीं मिली तो? चल जाता है कभी कभी, बट वही है कि वेल स्लेप्ट होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए टू बी क्रिएटिव. Okay. इफ आई एम वेरी वेल स्लेप्ट आई थिंक आई कैन जस्ट गेट अप एंड सिट ऑन द टेबल एंड जस्ट एकदम से सब होने लगता है. इट्स आई थिंक ये लाइफ हैक है कि शायद मैं सो जाती हूँ फिर कोई डाउनलोड्स होते हैं, फिर मैं उठ के उनको बाहर निकाल देती हूँ. Okay, हाँ great. हाँ. Okay, since we are in Shillong, okay, if you could hit pause on life and take 1 month vacation anywhere, where would you go and why? Where would I go? I think I sort of know it. You'll go Himachal. You'll go Himachal, Shanti se, and you'll keep on exploring Himachal के places. हाँ. नहीं, आई डोंट माइंड ऑल्सो कि मेरे को एक्सप्लोर करना पड़ रहा है. जैसे यहाँ बैठे हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, इट्स सो ग्रीन एंड एवरीथिंग. तो मेरे को ना वो भगदड़ वाली ट्रिप्स एज यू नो नहीं पसंद है. सो आई डोंट माइंड ऑल्सो लिविंग एट अ ब्यूटीफुल नाइस एयरबीएनबी एंड इन सम हिली एरिया जहाँ पे ठंड बर्दाश्त हो सकती है उतनी. ऐसा भी नहीं ना कि भाई चला फिरा ही नहीं जा रहा है, जाके बस बैठ गए रजाई में, कुछ हो ही नहीं रहा है हमसे, इतनी ठंड है. तो या इट कैन बी हियर एज वेल, बट यहाँ पे बस एक ही इशू है दैट कि हम वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन. तो खाने का बहुत सोचना पड़ता है. रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी गुड. या समवेयर इन नेचर Do you with have a lesser favorite people. place? Himachal, of course. See, Himachal. told you. And somewhere in Rajasthan also in winters. Okay. ठीक है, और तो कहीं नहीं. राजस्थान में भी बहुत ऐसे आउटर प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जहाँ पे यू कैन जस्ट गो एंड लाइक Relax. आई लाइक टू जस्ट गो समवेयर एंड ले लो. यू नो, ये नहीं कि बस 2 दिन बाद यहाँ से सूटकेस उठाओ, वहाँ नहीं हो पाएगा. Okay. Great. For me, if I have to go for a month, ठीक है, I would just buy one-way ticket to New Zealand और मैं चली जाऊंगी. I'll not tell anybody. I will just disappear and मस्त से शांति में I'll stay in New Zealand, explore the places because it's beautiful, and then come back and be like, okay, I was here, I was there, something like that. दैट वे. तो मतलब अगर मैं इफ आई हैव टू चूज जिन जगहों पे मैं नहीं गई हूँ अभी तक, हिमाचल इज समथिंग कि मैं जा चुकी हूँ तो You know the place. या. बट इफ आई वांट टू गो समवेयर इफ आई हैवंट बीन, अगर ऐसी भी कोई जगह है तो it would be, I think so, somewhere like in Europe, Okay. or it can also be um, Denmark.
That's nice, really nice place. Denmark या is really बस nice. एक ही चीज है कि जहाँ खाना मेरा सॉर्टेड होगा ना, इतने लंबे समय तक तो मैं वहीं रह सकती हूँ. Okay, great. I mean, even I surely want to visit Chiang Mai, which is in Thailand. Bangkok बहुत popular हो चुका है, but I think Chiang Mai is very underrated and it's all historic या वही places. So I हिस्टोरिक. really want to go there, एंड शांति आई डोंट से. माइंड इजिप्ट ऑल्सो, बस मेरे को वो किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, Hmm, चाहे वो कोई भी जगह हो. correct, correct. Okay. When you're not working, what's your one way to unwind yourself? Just sleep. You You'll know just that. sleep. I'll watch TV and sleep in my bed So and how does eat a whatever I perfect like. lazy day look like? A day. You're doing nothing of your work, no calls, your phone is on the silent. What will you do? If I'm in Jaipur, I वही है ना, जल्दी उठने की आदत है तो जल्दी तो उठ ही जाते हैं. बाय 7 आई एम अप. Hmm. तो मैं बढ़िया भर के अपना अदरक वाली चाय बनाती हूँ आराम से. आई हैव माई चाय. इफ आई एम गोइंग टू द जिम, जैसे छुट्टी वाले दिन आई प्रेफर गोइंग टू द जिम, Hmm. क्योंकि आई कैन स्पेंड मोर आवर्स इन द जिम than a work day. So that is my place of unwinding. I go there, spend 2-3 hours, sometimes 4 hours as well. Workout करो आराम से, steam लो, spa लो, ठूस लो, बढ़िया खा लो. उसके बाद कम होम, जब वो स्टीम वीम लेके वर्कआउट करके आप आते हो ना, क्रेजी नींद आती है. फिर आके सीधा सो जाओ और बढ़िया शाम को उठो, फिर वापस चाय बना लो, फिर टीवी Chai, देखते sleep. रहो. हाँ, टीवी देखते रहो, घर पे बात कर लो, तेरे से बात कर लो. That's Nice. it. But agar say suppose we are out, okay, we are such like a nice relaxing place. You wake up at 7. So the whole day ka schedule, how will it go On my mood. on your mood? It's literally, I don't like to be on clock या Okay. फिर ऑन डे वाइज. तूने देखा हम वापस जाने की टिकट्स नहीं करी है बुक. इनफैक्ट हम कल कहाँ होने वाले हैं हमें नहीं पता है, Right. बिकॉज So आई in डोंट the लाइक दैट. present wala या person. या जैसे Great. टुडे वी थॉट कि वी मे गो आउट फॉर द स्कूटी एंड एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट नहीं कर रहा मन यार. तो Here we are recording the podcast. हाँ, बिकॉज इट्स सच अ नाइस प्रॉपर्टी, इट्स स्पेशियस. और मतलब हमें ग्रीन्स में ही तो होना था, पहाड़ों में ही तो होना था. तो ये वही है, हम वहाँ पे, तो क्यों अपने आप को एग्जॉस्ट कर करके वो कर देना है. वी आर हियर फॉर अ ब्रेक, राइट. आई एम नॉट दैट पर्सन की हॉलीडे पे 10 जगह जाके मुझे स्टोरियाँ लगानी है कि मैंने 10 जगह कवर कर ली है. So relaxing for you is like peace, Peace, nature, lots of chai and coffee whenever I and want, sleep, when in mountains, and sleep, food, yeah, and just chill. and sun, Yeah, very important. just chill. या पढ़े रहो, म्यूजिक सुनो. यू सॉ ऐसे ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक कभी चल जाता है, कभी एकदम कुछ Punk और ही wala जोन. chal jata hai. Okay. I mean, if I have to do it, I have it whole schedule wise. I'm that clock wala person. So, say suppose I have to take one day off. Okay, be it weekdays or weekend. I will. I'll wake up early, somewhere around 6, 7. I'll wake up. I'll take a nice walk. Um, if I have like if it's summer, okay, I'll just go. I'll have a nice swimming. I'll do what 3, 4 laps. Just get come inside. Must se prepare the breakfast. I'll make it for myself. No ordering, no eating outside. I'll make a breakfast, watch movie or read a book and sleep. वो ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास में बनाने Yeah. का, वरना Well, तुझे लगता है कि मैं तेरे को छोड़ देती. जो तू इतनी फोटो में भेजती रहती है ना मुझे, मैंने ये बनाया ये बनाया. इट्स ऑल अ ब्लफ, आई नो yeah. दैट. No, I make it. I make really good आई food. हैवंट सीन इट येट. Okay. फिर उसके बाद I would have इसके बाद हम एयरबीएनबी ले रहे हैं विनी, और तू मेरे लिए खाना बना रही है पूरे टाइम, ठीक है. फिर उसके बाद I would have slept. फिर उसके बाद मैं उठ के I would have gone in the garden. I would have done again swimming. या फिर अगर मैंने लंच बनाया होता खुद के लिए. स्विमिंग इतनी ठंड में. समर ना, समर का स्केड्यूल बता रही हूँ. फिर ठीक एंड है. देन फिर उसके बाद I would have gone to the swimming. I would have done it. फिर उसके बाद मैं आके सो गई होती. शाम को उठ के मे बी साइकिलिंग करके prepare a very early meal dinner का. And then just watch something nice, really nice movie and then sleep. Nothing, no calling, no texting, no just like doing this, that, no going out. हाँ, Shanti se. यही तो किया कल हमने. This is my schedule. You forgot one thing. What did I Read forgot? a book. I said no, I would have read the book in the morning वाला. हाँ. हाँ. तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो? तुम तो टांग खींचने के पीछे हो मेरे. Okay, guys, ऐसे चलता रहता है हमारा. What does the meaning of Dokri? Now let's really talk about Dokri. Okay.
So the meaning is, वैसे mostly north में people understand North India में few states, Punjab, I don't know Punjab, but UP, राजस्थान इस side में ऐसे बहुत प्यार से ना किसी बूढ़ी लेडी को डोकरी बोला जाता है. So my mother also calls my nanny डोकरी. तो yeah, डोकरी means addressing an old lady प्यार से. Just tell the viewers कि हमारा tagline क्या है डोकरी का. So डोकरी का tagline है the modern old soul, जो हम दोनों हैं भी, you know. Inspired by the living people. Yeah. Okay. We will be recording a podcast for Dokri specially, but some just questions about Dokri. If it was a movie, if Dokri was a character or a movie, how would you describe her personality? A old lady in old barn or a village, nicely working I think on for that, herself. जब हमारा shoot का वो जो videos release होंगे ना, I think that really clearly state that. But yeah, जो हम अभी कर रहे हैं literally, you know, chill, uh, slow, happy vibe with lots of nature, healing, comfort. I think, yeah, and wisdom. Hmm. But so if I have to give a character for Dokri, I think it would be an old lady, yet who has a modern style, and just elegant. And Elegant is an the word. opposite as well. Huh. Because young lady like you, Who has an old taste. ठीक है? Yeah, so it goes about the mindset and taste. So like, yeah, because a young lady can also have that sort of mindset, which you also have. Me, हम लोग हैं ही ना ऐसे. So it can be vice versa. Right. Okay. If Dokri could open a flagship store anywhere in the world, where would you do it first? First, of course, Jaipur. Of course, without a doubt. Jaipur is my love, and I think it all started from there only for me, everything. I've been in love with Jaipur since I went there for the first time. So it will be Jaipur, Okay. 100%. And And if also into outside? some heritage property or something. Yeah, it's not going to be just a store, it's going to be an experience. I want to create an experiential store, which is not just about going and buying stuff, it's about way more Okay. just than that. Nice. Yeah. And if it was supposed to be outside, somewhere in abroad? Outside, अभी मैं इतना गई नहीं हूँ कहीं, तो I don't know, Any honestly. favorite place? But probably Japan. Okay. This is what I feel. Nice. Nice. And if you could describe Dokri in just 3 words, what would be they? Comfortable, powerful, and what? Think. Easy to go. Easy to go. If I have to give Dokri, elegant, um, easygoing, and I think it should be experience. That is what Dokri is for me. Okay. Removing the topic of Dokri, what's one moment in your journey that felt like what just happened, like a movie scene? बहुत सारे हैं. I feel like my The whole life is a recent one. movie. The recent one. The recent तो तुझे पता ही है that this huge brand that I've been trying to work with, and yeah, it's been 6-7 months का process है जो चल रहा है. So yeah, it's a big name, but I've been struggling as well with them. So, but yes, it was a pinch me moment because they came up to me, and the guy, like the person who came up to me from the brand, is an investor in a lot of brands. He's a veteran. Yeah. He's a veteran. Yeah, I will not reveal much about it, but because I think I don't know if I'm allowed to, but yeah, it was a pinch me moment because I didn't even apply or do anything about it, and I'm not as active on LinkedIn as I'm supposed to be. But he still found me, approached me, liked my work, came here, met me. Yeah, we started. थोड़ा ups and downs चल रहा है अभी, but yeah, I think we'll figure it out. Right. But it was a pinch me moment that उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया ऐसे. That was like, really, वहाँ ऐसे इन्होंने मुझे क्यों ढूंढा, ऐसे था. मुझे ढूंढ के क्या मिलेगा इनको.
मिल रहा है ना? Okay. The last question, and we'll wrap it up here because we have much more to discuss in the podcast of Dokri. What's something you want to share about your upcoming work apart from Dokri? Okay, upcoming work में first of all, my agenda is to teach people more about freelancing because मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था who कोई मुझे गाइड करता. आई हैड टू फिगर माई वे आउट. ठीक है. एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रगल इट इज फॉर अ क्रिएटिव टू बी इन अ कॉर्पोरेट जॉब. Right. सो फॉर पीपल, फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स, आई डोंट नो. हाँ हूँ मैं थोड़ी बायस गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, बट I would want them to learn the importance first of all of freelancing, and also कि ये possible है. बस ये है कि you just need to figure few things out, and I think I'm here to tell you because nobody was there to tell me all of that. So I want to give it back to the society for And the community. way more, like, yeah. Then क्या था क्वेश्चन, भूल ही गई मैं. The upcoming works that you have. Upcoming So work. freelancing is one. I know. Freelancing is तो मेरा चल ही रहा है. ठीक Yeah, है. right. I want to expand more in freelancing. Like I want to have more clients and of course build a team slowly. मैं मतलब I don't want to go crazy also कि भाई सामने से जितना आ रहा है सब ले लो. Now I am not that person. I choose my work, but I really want to expand my freelancing wala part because I'm changing my freelancing services into an agency services now, because when you have 2 to 3, more than 3 clients at least, so you It gets can be difficult to manage. yeah, you can be an agency and build a team. Right. Yeah, and then I think you're going to be seeing me much more on social media today these days. Finally, you'll not be आगे चल camera के conscious. yeah, I'm trying not to be, but slowly हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, because मतलब business के लिए ज़रूरी है भाई personal branding. You have Right. to come out and speak about you and your product, because as a freelancer nobody's going to do that for you. You'll have to do it for yourself. So you're going to probably be See the seeing personal branding. way more of me on social media. Yeah, way more trips क्योंकि मेरा हो गया है अब. आई थिंक आई नीड ट्रिप्स हर थोड़े टाइम में. मुझे रियलाइज हो गया कि मैं ओवर एक्सर्ट कर लेती हूँ अपने आप को, सो थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक्स लेना ज़रूरी है. Okay. So, in short, you're doing on freelancing, personal branding, and trips. Yeah, freelancing, maybe this year I want to enter into teaching freelancing more as well, because a lot of people already come up to me. हो गए 2-3 साल. People come up to me and they want to know how I did it, why I did it, कैसे किया, कैसे बात की, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनवॉइस क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए. सो आई एम गोना शायद in a nutshell ऐसे कोर्स बनाऊंगी. Okay. And like provide it to people, also take seminars in probably in colleges, design colleges and all of that. Yeah, and like just openly सब बता देना है कि ऐसे होती है freelancing भाई. It's no secret, you know, because people keep it as a secret. Right. हम तो अपना secret ऐसे leak कर देंगे खुले में. Okay. Great. So that's it. That's the wrap of the first podcast. I'm keeping it very short because मुझे पता है ये very short था. मुझे पता है डोकरी में बहुत बोलने वाले हैं हम. So I don't want to bore the audience, but thank you so much for the time. Thank you so much for the words. Finally, you were like, ठीक है, let's record this. And क्योंकि you remember this is the third time me convincing you कि please कर लेते हैं. नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को करना तो था ही, बस Time नहीं ये है मिल रहा कि था हमें. मूड में आना पड़ता है और तबीयत. Yeah. Like we being in Jaipur, 2 बार we never recorded the podcast. We had to be in Shillong for We had this. to be in Shillong for that. ऐसे कहीं भी नहीं कर सकते ना. Yeah. So thank you so much, Neha. Thank you so much, Paji. हो गया. And हो गया. We will see you इतनी in the बार next थैंक one. यू तूने बोल दिया है. We'll see you in the next one where we'll talk about the Dokri. So thank you so much, guys, for listening. I'll put the link of Neha's ID if you ever want any tips or course things about the freelancing and all. And just let us know how was it and be ready for the next और detail में और पकाओ जहाँ पे हम डोकरी की बात करेंगे. So see you in the next one. Bye bye.